हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सबके सब? हाउ इज़ एवरीवन डूइंग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड, ग्रेट एंड फाइन। आज का सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जहाँ हम लोग करने वाले हैं 1.5 आवर की ढेर सारी टीचिंग को लेके प्रैक्टिस। जी हाँ, 1.5 आवर, यू हर्ड मी राइट। जैसे कि हाफ एन आवर सेशन हमारा रहेगा यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे हम लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बोनांजा सीरीज कवर कर रहे हैं पेपर 1 को लेके। आज ये जो हमारा सेशन है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है, ये सेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो सेशन 2 है हमारा ये बोनांजा सीरीज में। हम ऑलरेडी रिसर्च कवर कर चुके हैं और आपको साथ ही साथ में बता दूं कि ऑलरेडी आज अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में चल रहा है लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ढेर सारे MCQs करने का एक पूरा सिलसिला, जहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लास स्टार्ट्स एट 4:35 PM राइट, अनअकैडमी स्पेशल क्लास। और स्पेशल क्लासेस जो है एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस। इन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए एक अनलॉक कोड है जो मैं आपको दे रही हूँ। अनलॉक कोड इज माई नेम्स शॉर्ट ASHI10। ये अनलॉक कोड से आप स्पेशल फ्री क्लासेस जो हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, स्पेशल फ्री क्लासेस। ठीक है, और यहाँ पे पेपर 1 को लेके लेटेस्ट सीरीज जो है, वो लेटेस्ट पैटर्न जो आपका अभी 2020 का एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे, क्योंकि आपको वहाँ के मैंने मल्टीपल शिफ्ट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं अनअकैडमी के ऊपर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो भी क्लासेस आप देख सकते हैं और लेटेस्ट पैटर्न के इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही लेटेस्ट पैटर्न के इस बार फ्रेश जो है क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। ये तो शुरू हो चुका है मिशन, लेकिन मिशन के अलावा एक और चीज़ है जो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करने वाला है, वो है अनअकैडमी कॉम्बैट। वाओ, द नेम सजेस्ट इज ऑल। इट्स गोइंग टू बी अ गेमिफाइड वर्जन ऑफ quizzes. It's going to be prizes galore when you actually can win exciting prizes of rank 1, जैसे कि Amazon का 10,000 रुपीज़ का वाउचर है, 5,000 का वाउचर है। बट वाउचर से भी ज़्यादा इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो आपको मिलेगी, गुड ओरिजिनल क्वालिटी क्वेश्चंस के ऊपर बहुत तगड़ा एक्सपोजर। यहाँ पे इस गेमिफाइड कॉम्बैट को अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्या काम करना है, सब्सक्रिप्शन पेड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है मैनेजमेंट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एंड पेपर 1 के लिए। जी हाँ, तो 40 क्वेश्चंस जो हैं वो गेमिफाइड तौर पे आपके लिए हर फोर्टनाइट के कंपटीशन के तौर पे यहाँ प्रेजेंट किए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये सबसे पहला गेमिफाइड कॉम्बैट जो है शुरू हो रहा है जनवरी 17 को सुबह 11 बजे। तो अभी एनरोल कर लीजिए सो दैट आपको टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए, भूल ना जाए, तो उसको हर हालत में एनरोल कर लीजिए। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें मज़ा ये आएगा, ओरिजिनल NTA क्वेश्चन तैयार हुए हैं आपके लिए। और इसके अलावा ये है कि बहुत ज़बरदस्त जो है लेटेस्ट पैटर्न इसमें कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट पैटर्न की आपकी तैयारी पूरी की पूरी हो सके। बोनांजा सीरीज यहाँ चल रही है, कॉम्बैट आ चुका है, और कॉम्बैट के जो कॉम्बैट है वो मेजर चीज़ है जो आप लोगों के लिए आई है। और फिर इसमें जो है वो मैं आपके लिए करवा रही हूँ लेटेस्ट पैटर्न के MCQs। अच्छा हाँ, एक बात और याद आई कॉम्बैट में, बहुत मज़ेदार बात, वीडियो सोल्यूशंस के साथ ये होने वाली है क्विज़ेस। जी हाँ, वीडियो सोल्यूशंस के साथ है ये, सो दैट आपका अगर कोई क्वेश्चन करेक्ट नहीं हुआ है तो भी आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन करेक्ट हो गया तो भी एक बार टीचर से एक्सप्लेनेशन जो है आप अटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो सोल्यूशंस है डिटेल्ड, ऑल इंडिया बेसिस पे लाइव जो है ये होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड। तो ये चीज़ जो है वो आप कवर करेंगे हमारे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी कॉम्बैट के तौर पे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं, जहां मैं कवर करने वाली हूँ आपके संग ढेर सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। जल्द से जल्द जो जुड़ चुके हैं ज़रा मुझे एक बार हाई लिख के भेज दीजिए, देखें कौन कौन आया हुआ है। जल्दी से एक हाई लिख के मुझे डाल दीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड आज मैंने आपको करवाना है। ट्रस्ट मी, टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ वन सच area which is very easy to score अगर if you hit the right chord। ठीक है, once it's just to hitting the right chord। टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 on 5 का क्वेश्चंस टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। जितना आपको मैथ से डर लगता है ना, उतना ही प्यार आप इस सब्जेक्ट से करो। जितना ज़्यादा आपको मैथ से डर लगता है, मैथ्स आपका कंफर्टेबल करवाऊंगी मैं, तो वो कोई टेंशन नहीं है, उसका टेंशन मत लो। आने वाले क्लासेस में इसी बोनांजा सीरीज़ में भी आपके संग ढेर सारे टॉपिक्स होंगे। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में जो है वो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो जो जुड़ चुके हैं एक बार हाई लिख के भेज दीजिए मुझे। सेशन में वी हैव अंकुर एंड राम कुमार। वेलकम टू क्लास बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच सेज फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास
with large strength, which of the teaching technique is best? Is it debate, discussions, group work with lecture and class notes, या फिर self study and asking questions? देखिए, in case if you have large strength, and mostly colleges and classes do have large strengths such as above 60 students, or like batch size is 60 students. So in that situation, conducting debates and discussions would be a little bit difficult, because of the fact is that if you actually get into debates and discussions, creating groups, that will be a tough situation, because then groups के ऊपर एक ही घंटे के लेक्चर में पूरे उनके रिजल्ट्स को वेरीफाई करना, उनकी जो ग्रे एरियाज हैं उन्हें बताना, ग्रे एरियाज को इम्प्रूव करना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है. इसलिए विद लार्ज स्ट्रेंथ इज मच मोर बेटर टू हैव अ टीचिंग स्ट्रैटेजी विच इज lecture and class note method, wherein the teacher can provide class notes, give lectures, the listener is active listener, जैसे कि आप लोग सारे के सारे हैं, और एक्टिव लिसनिंग के थ्रू लेक्चर्स एंड टॉपिक्स जो है कंप्लीट किए जा सकते हैं, कंप्लीटली इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं. ठीक है, सो henceforth सजेस्टिव है दैट यू initiate the lecture and class note method because of the large size. अगर large size ना हो class का, then what will be the best option, ma'am? Is it debate or group work with a lecture? I would say the best option is if you have a small size, rather very small size of the class, 10-15 odd students, debates will be better and more improvised as compared to group work with lecture के. Group work में students group work करते हैं, teacher उनको guidelines दे देता है, lecture हो गया, that's it. That's not that interesting area. But when you have detailed debates and discussions, it gives you a practical bent of mind, wherein you can actually go ahead and perform better. But in large classes, lectures are the preferred methodology. Okay, moving on, next question on the screen everybody is that in case you are टॉकिंग एंड देयर इज टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन योर क्लास. आप लोग टीचर्स बनने वाले हैं, तो अगर आपकी क्लास में टॉकिंग इनडिसिप्लिन होगा क्लास में, तो क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? कि आपके बच्चे शैतान हैं, या क्योंकि आप बहुत बार चीज़ को रिपीट कर रहे हैं इसलिए बच्चे बोर हो रहे हैं, कन्फ्यूजन है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, या फिर आप जो है लेक्चर पॉइंट्स को समराइज नहीं कर रहे हैं. तो देखिए, जब टॉकिंग और इनडिसिप्लिन होता है ना, तो क्लास में या तो रेपिटेटिवनेस है या कन्फ्यूजन है कि पढ़ाया क्या जा रहा है. लेकिन जब कन्फ्यूजन हो क्लास में, तो बच्चा पूछेगा, टीचर भी पूछेगा, तो कंफ्यूजन क्लियर किया जा सकता है. लेकिन बॉर्डम हो, रेपिटेटिवनेस हो, तो डिसिप्लिन होगा ही होगा. तब तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अटेंडेंस के लिए बैठे हैं. तो henceforth टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन लीड्स टू a situation wherein the teacher is not able to handle the class well. तो इसीलिए इससे आपको एक हिंट मिल जाता है कि जब आप जाएंगे क्लास में पढ़ाने के लिए, at that point of time make sure that you do not repeat and there is hardly any boredom. Make the class more interesting. Your teaching strategy should be not just you're going there and standing in front of the class delivering a lecture and lecture method is there and that's it, done. No, students need not be involved in the classroom with the help of your examples, but they need to be involved in the subject matter, in the content which you're providing to them, so that they feel the content, so that they understand, interpret the content. You need to interpret the concept. तो अगर मैं बार बार कह रही हूँ कि आप टीचर बनने वाले हैं, आप इन क्वेश्चंस को रख के करिए. द आइडिया बिहाइंड माई टीचिंग इज टू मेक यू वेल इक्विप्ड towards handling such kind of situations. तो मैं भी आपका boredom जो है वो यहाँ होने नहीं दे रही हूँ. ठीक है, that ways you're supposed to move. Next question on the screen everybody. हाँ, क्वेश्चंस के आंसर देते रहिएगा मुझे यहाँ पे. ठीक है, ओके. यू हैव अ मिक्स क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम? आज की डेट में there is no concept of gender disparity. We always had gender equality, and inequality is something which we never look forward to. But in that situation also, the situation is that if in case you have adolescent learners, in case you have boys and girls who are not sitting on the same bench, the problem would be that there would be a situation where there is ice between both the genders and in the entire classroom. To break that ice, the teacher can actually set the task with the help of students and give them group work, wherein the boys and girls, perhaps mostly in equal proportions to each other, that 4 boys and 4 girls are there, or 2 boys or 2 girls are there, that ways in one group. And you can actually ask them not only to cooperate with each other, but also increase the knowledge base of one and the other by letting them know what the other knows
एक बंदे ने, राम ने बताया श्याम को कि उसे क्या पता था, श्याम ने बताया सीता को उसे क्या पता था कंटेंट को लेके. सो बेसिकली ऑल इन ऑल द कंटेंट इज बीइंग डिस्कस्ड, नॉट ओनली कोऑपरेशन इज हैपनिंग. सो कोऑपरेशन तो वही हुआ ना जब कंटेंट आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो वंस एक्चुअली यू वांट टू एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी, इट विल बी बट ऑब्वियस दैट यू गो अहेड एंड गिव देम टास्क व्हिच दे कैन परफॉर्म टुगेदर. ठीक है, डन. चलिए, परफेक्ट. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट your training in public speaking and debate. Which of the following characteristics can you not expect to develop? Okay, now you are a teacher, you are a trainer. Okay, now if you're training them how to speak in public, especially when your students are going to anchor the national conferences, going to anchor seminars of the colleges, there is a freshers party in the college which has to be anchored in the initial time period before the dance and the party begins, right? In all those situations, the student has to be trained on public speaking. The student has to be informed what are the nuances of public speaking and debate. In such a situation, a teacher is there for the rescue. So what would the teacher do? Teacher would actually go ahead and inform the student, make him learn, make him practice a little bit more, ask him to opt for voice modulation, voice intonation, जिससे हमें एम्फेसिस जो है टॉपिक्स के ऊपर मिले, और लैंग्वेज का इस्तेमाल सही जगह पे इस्तेमाल, एज लाइक इफ रिक्वायर्ड यूज हिंदी, इफ रिक्वायर्ड यूज इंग्लिश, इफ रिक्वायर्ड यूज मराठी, व्हाटसोएवर एज द सिचुएशन में बी. ठीक है, सो लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन you can do. You can make the student understand the concept behind that particular public speaking. Perhaps it's just a conference. If it's a conference, the shoulders which are going to actually anchor this particular conference are going to bear the burden, because conferences are not a small task which is to be handled. So the teacher can actually impart the student about what exactly has to be done. So the concept clarity will be provided by the teacher. But when it comes to control over emotions, that's a different aspect. That's different as well as difficult aspect both at the same time, because of the fact, see, nobody can teach you how to control your emotions. It's you yourself who has to control your emotions. Like for example, there are students who perhaps do not qualify in first attempt. ठीक है, फिर उसके बाद वो टीचर चेंज करते हैं. यार मैं तो उस टीचर के चक्कर में पड़ गया था, वो टीचर को सब फॉलो कर रहे थे, तो मैंने देखा मैं भी सबकी तरह ही वहाँ पे चलता हूँ. ठीक है, बाद में पता चला मेरा अटेम्प्ट नहीं निकला. अरे भैया पहले ही संभल जाते. ठीक है, लेकिन पहले इमोशंस जो थे ना मैम, वो उस तरफ में निकल गए थे कि सब जा रहे तो मैं भी उधर जाता हूँ, तो मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया. मैंने कहा अब कंट्रोल कर लो. अब चीज़ के साथ इमोशंस मत लगाओ, कॉन्सेप्ट के साथ इमोशंस लगाओ. ये मत देखो कि कहाँ सारी दुनिया जा रही है, ये देखो कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल आप खुद कर सकते हो. अपने इंप्रूवमेंट जो अंदर से आना है उस पर आप खुद इंप्रूवमेंट जो है चेकआउट कर सकते हो, आप इंप्रूव हो कि नहीं हो. परसों मेरे पास एक मैसेज आया कि मैम क्विज में ना हमेशा स्कोर 7 आउट ऑफ 10 ही आके रह रहा है, बढ़ नहीं रहा है स्कोर, क्या करें. तो मैंने कहा यार अच्छी बात है, अंदर से उम्मीद तो आई ना कि मुझे अपना स्कोर चेंज करना है क्विजेस के अंदर में, तो वो आपके अंदर से आना चाहिए. आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकता, आप खुद एज अ टीचर जो है वो किसी को ये चीज़ सिखा नहीं सकते. तो henceforth कंट्रोल ओवर इमोशंस इज समथिंग विच कैन नॉट बी टॉट. इवन पेरेंट्स कैन नॉट टीच दिस थिंग. ठीक है, सो henceforth द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल ओवर emotions isn't possible, and which something can a teacher teach. So that has to be learned by themselves. The teacher has to learn it by the student has to learn it by themselves or himself. It's not the teacher who would be able to actually help you do it. ठीक है, so correct answer option number B हुआ. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो. मूविंग ऑन, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास? Achieve learning objective, delimit what is being taught, explain ideas and concepts, set new standards. देखिए, if you are using a textbook, the idea is not to delimit what is being taught, because delimiting what is being taught can be done with the help of examples, because book is going to encompass everything which can be taught about the subject, right? So why it's delimiting? It's not delimiting, it's actually limiting what can be taught. So book is actually not delimiting. Now is it setting new standards? The answer is no, because conventionally in conventional programs we do read books, so it's not setting any kind of new standards. Is it helping you achieve learning objectives, or is it to explain the ideas and concepts? See, the thing is that it will help you achieve learning objectives which have been enlisted in the book, or which have been enlisted in the curriculum or the pedagogy or the syllabus, right? The books are actually prepared based on the concepts, and concepts are something which has to be taught. But
कितना ज़्यादा कितना कम कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ही क्लैरिटी होगी, जो कि आपको चैप्टर के स्टार्ट में भी दिए रखे होते हैं या आपको सिलेबस में दिए रखे होते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, टेक्स्ट बुक्स उसके लिए यूजफुल रहती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, डन, perfect. Okay, moving on, we are going to next talk about next question on the screen, which is subject tries to understand the role of man in changing environment. Which exactly subject am I talking about? I'm talking about role of man in changing his environment. मतलब tries to understand इंसान, आप, मैं, हम चेंज कर सकते हैं अपना खुद का एनवायरनमेंट। वो कैसे? बायोलॉजी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से। हाउ पॉलिटिकल साइंस? बिकॉज इफ इन केस यू इम्प्रोवाइज योर ओन एनवायरनमेंट, इट इज़ बेसिकली इम्प्रोवाइजिंग आपके आसपास का एनवायरनमेंट, राइट, एंड इन विच यू आर स्टेइंग, एंड इफ यू चेंज इट ग्रेजुअली, इफ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, आपके एनवायरनमेंट में तो चेंज आया। एंड पॉलिटिकल साइंस टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट। ठीक है, सो सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग हिज और हर ओन एनवायरनमेंट इज पॉलिटिकल साइंस, नॉट बायोलॉजी, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी? ओके, टीचर ट्रेनिंग simply means that you are a teacher, you are a faculty or a professor, you are getting trained. See, and now teacher training or any kind of training is basically improvising or enhancing the current skill set. And if you are doing that, enhancing your current skill set, it is going to train you on what is required right now. Like for example, if I have given an examination called NTA ARPIT, Annual Refresher Program in Teaching, conducted by NTA. So if I qualified twice NTA ARPIT examination, this examination is for me because I am a faculty and I would be brushed up and sharpened in my teaching skills every other time in my subject domain, in management, in finance, right? So my subject domain skills will be a little bit higher. In that situation, we say that we are increasing on our teaching acumen, teaching skills as well. We are getting to know what exactly is going on in the industry as well with the help of these skill set improvement trainings, right? It helps you understand the method of school organization, understand methods of school organization. Absolutely, it lets you aware what exactly is the situation going on for school and as well as colleges as well. If you have your HOD, you have to manage your college on behalf of director. There is no director, then also you can do that. So it helps you gain an acumen on that. Upgrade knowledge of content. Yes, as I just righteously said you a moment back, that yes, it is very much possible once you are actually training yourself. The idea is to understand that you are increasing on any kind of knowledge which is right now prevailing in the industry, perhaps which you never knew before, and that knowledge can be explained to the teacher, and the teacher can learn it and give an examination on that as well and be trained, so that newer nuances, newer set of examples and topics will be in awareness of the teacher, and he would be very effective. He would try to become an effective teacher, right? Moving on, we are going to be next talking about next question. Study of dash improves a student's ability to experiment, analyze. Well, it's a study of science which helps the student experiment and analyze. It's not because science has experiments, biology, chemistry, physics experiments. No, it's actually talking about analysis. You remember whenever we used to do a science experiment, a biology, chemistry, physics, we used to write a practical file, observations are practical files. What is the objective of doing a test? What exactly have we learned after doing the experiment? What are our citations? What are our recommendations? We used to write that everything in our practical files. So if we actually do that, it will help us and start analyzing situations. So it will give us a analytical bent of mind, and that is possible by science. Maths is all about testing theorems and playing with numbers, right? Next question. Learning in mother tongue helps a student to dash what is being taught. Okay, now this is an important aspect as per the National Education Policy 2020 as well, because mother tongue has been made mandatory for actually learning and teaching in mother tongue has been made mandatory by the NEP policy of 2020 up till 5th class. So in case if your student is studying, if your child is studying in 3rd class or 5th class or 4th class, he is supposed to learn topics in his mother tongue. If his mother tongue is Gujarati, Tamil, Telugu, Marathi, Bengali, Punjabi, okay, that mother tongue is something which he is supposed to study in the subjects which are specifically up to the grade 5. But what does it actually help you do that?
if you're learning in mother tongue, the idea is not to interpret or create or reproduce, it's easily comprehension of the topic, right? Because you are well acquainted with your mother tongue. It's your start development days till the 5th grade, and it's usually initially when your psychomotor skills have started developing. Now in that situation, if you're asked to comprehend a foreign language, first you have to learn the language, then you have to comprehend the concept of another topic by using that language in that particular topic. That will not be an easy comprehension. For learning one subject, you have to learn actually two things. One is the language and the other is the subject. So it's going to be a very roller coaster ride for the student. So in initial time period, when the student is just in elementary classes, it's better to make him stick to mother tongue, and it will help him easily comprehend the things and concepts which he is being taught, right? Last question which we are going to discuss, and then we'll wind up the session. Which education psychologist believed in fact that all children have potential to learn? Is it Frederick Froebel, John Dewey, John and Frederick Herbert, or Maria Montessori? Well, it was John Dewey who said that, right? Okay, let's do another question. We have a set of questions, so why not do them? Teaching questions are very small and very easy to do, so let's go ahead and do it. Okay, best method to study growth and development of child is psychoanalytic method, comparative, developmental, or statistical method. Best method to study growth of a child, it's the developmental method. You are actually studying the growth of the child, development of the child. It's not psychoanalytic. You are doing a psychological analysis, right? But what you're studying, we are studying the development of the child. So it's possible through developmental method, understanding of the child's mental setup, right? Okay, next question. Use of technology to enhance learning process is called dash in education: information technology, communication technology, IT, or ICT. Use of technology, and it is being used to increase and enhance the learning process in education. If I talk about information technology in being used in education, that will be just sheer usage of computer, internet, etc., to let the student be aware of the outside world. There would be no exact learning involved. But if I use ICT and I use multiple aids to let the student be aware of how exactly ICT functions, if I let him know how exactly apps can be used, how exactly you best can use Google to optimize your search criteria with respect to content which the student is looking forward to, so I said his learning curve will be more enhancing. So ICT is what we are looking forward to here. Okay, now next question on the screen. What should be the role of teacher in meeting the individual difference? Teacher's role and individual's differences, like student to student, word to word, child to child, there is a difference. Now how the teacher can actually eliminate this disparity, because of the fact is we know that biologically also no two children or students are alike, but then it's the teacher who wants to make sure that both of the students in her class, or all the 60 students in her class, comprehend the topic very well equally. She doesn't want, or he doesn't want कि कोई बच्चा सिर्फ 40 marks लेके आ रहा है out of 100 and some particular student is getting 99 out of 100. So that teacher would not be actually looking forward to this kind of a disparity. In order to eliminate this disparity, how the teacher can actually put to use his or her effective teaching? Is it by trying to know the ability and aptitude of the individual, try to adjust the curriculum as per the needs, both A and B, and none of these? See, even if you know the ability of the student and aptitude area, how would you actually be able to eliminate the differences? There is no hint in this particular option. If you adjust the curriculum as per the needs of the student, then what is the need of using the curriculum? Okay, so both the options go out the window. It is none of the above is correct, because then if you have to utilize a teacher so as to make sure that both the students or all the students are not at disparity, they do not have differences amongst themselves, these are those people who are equally alike understanding a concept, in that situation teacher can use multiple teaching strategies to be effective with each and every student, in case if she or he has a fewer number of students in the classroom. Okay, right? That's it.
So that's it from my side for today. I hope you guys would have liked the session. We can wind up the session for today and meet again in our next class. Once again, I would like to let you know that you can access all my free classes using the unlock code ASHI10. It will actually help you access all the free special classes which I have been doing and which I've done in the past. At 4:35 p.m. we are starting off today's session for latest pattern MCQs with respect to the JRF 2021 series, and also to let you know that I have started Complete Paper 1 is already launched on the platform. Complete Paper 1 can be accessed. The classes will be happening at 6 p.m. The Complete Paper 1 classes happen at 6 p.m. and you have to take a subscription for that and prepare in detail. Subscription can be taken for 3 months, 6 months, 12 months or 24 months, and there is a discount as well in subscription. The discount code is again ASHI10. You'll get a 10% off. Discount code ASHI10, you'll get another 10% off. Okay, 10% off. And in case if you have certain coins, you have watched any free classes, special classes, तो वो भी डिस्काउंट आपका जो है एड अप हो जाएगा. 10% के ऊपर आपका डिस्काउंट जो है चला जाएगा अगर आपने फ्री क्लासेस देखी हुई हैं तो. ठीक है, चलिए. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन come live on 17 January at 11 a.m. for the Unacademy Combat, one of the most interesting all India basis fortnight competition combat, which starts on 17th of January. It's going to be comprising original questions prepared on the latest pattern of UGC, and to throw it more in it, we have a pool of exciting prizes and Amazon vouchers in it as well. So let's wind up the session. Let's meet again, and don't forget to tune in to special classes for the latest pattern questions as well on Unacademy, and don't forget to subscribe using discount code ASHI10 for 10% off. Thank you so very much for watching. I hope you liked the session. Don't forget to hit it a like. Take care. God bless. Namaskar.